नमस्कार दोस्तों, आज का जो विषय है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ये सेक्शन जनरली अपन एग्जॉस्ट कब करते हैं या कब इसको इन्वोक करते हैं, रीज़न क्या है बोल तो जब वन ऑफ द स्पाउस इज़ नॉट कोऑपरेटिंग विद द अदर स्पाउस एंड नॉट लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस और इंटेंशनली नेग्लेक्ट्स द वाइफ और द हस्बैंड और छोड़ के चले जाना या तो अलग रहना, ऐसा कुछ भी रहा। जब वन ऑफ द पार्टी बहुत कन्विंस करके या तो अपनी तरफ से पूरा ट्राई करके फिर फैमिली लाइफ में बुलाए तो भी अगर दूसरा पार्टी ना आए, लाइक वाइफ और हस्बैंड, एनी वन ऑफ द पार्टी, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स फाइल किया जाता है कोर्ट में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बोल दो, जब औरत या पति दोनों में से कोई भी अपनी पत्नी से या पति से दूर रह के कई महीने या साल गुजर जाए, वो अपनी पत्नी या पति को फिर घर में बुलाना चाह रहे मैट्रिमोनियल रिलेशन में, तो ये सेक्शन के द्वारा पिटीशन फाइल किया जाता है ओपी बिफोर द फैमिली कोर्ट। तो ये सेक्शन इन्वोक करने से पहले यू हैव टू गिव ए लीगल नोटिस टू द अदर पार्टी saying that you want them to come again for the matrimonial relation, घर में आके रहने के लिए या तो साथ में आके मैट्रिमोनियल रिलेशन में रहने के लिए साथ में आप रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स के नीचे आप पिटीशन फाइल करने से पहले एक लीगल नोटिस देना होता है। तो लीगल नोटिस में आप हमेशा एक जो मूल्य विषय है जिसको आप अपने माइंड में रखना है वो ये है कि आप उनको अपने साथ रहने के लिए बुला रहे हैं, यानी आपके लीगल नोटिस में कहीं भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि आप वार्निंग दे रहे हो, नहीं तो आप कोर्ट को जाएंगे अगेंस्ट यू एंड ऑल, ऐसा नहीं रह के आप उनको अपना जो भी है रीज़न क्या बताएंगे कि आप उनको बुलाना चाह रहे हैं और कई दिनों से आपके साथ वो नहीं रह रहे, जितने भी महीने या साल वो आपके साथ नहीं है वो आप उस लीगल नोटिस में मेंशन करते हुए आप उनको घर वापसी के लिए बुला रहे फॉर लीडिंग ए मैट्रिमोनियल लाइफ टुगेदर। और इसके अंदर मेन कारण क्या है बोलते, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उन्हें आके रहिए साथ में बोल के। अगर आपके लीगल नोटिस के अंदर आप क्या है टाइम प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है कि विद इन सो एंड सो टाइम यू कम एंड जॉइन द मैट्रिमोनियल लाइफ बोल के आप बताएंगे। उसके बाद अगर फिर भी दे अपोजिट पार्टीज और वन ऑफ द पार्टी इज़ नॉट रेडी टू रिसाइड विद द हस्बैंड और वाइफ, they can file a restitution of conjugal rights petition before the family court under section 9 of Hindu Marriage Act. तो 9 Marriage Act के नीचे you can file a petition before the family court and the court, after going through the legal notice and the evidence led by you, the court will pass order after going through the evidence led by both the parties or the cross examination of the parties or chief examination, whatever are been there in the course of trial, put forth before the court. Court, after going to the evidence part, it will allow the petition or disallow. If the petition is allowed and the opposite party is not at all coming to live with you after getting order in your favor, then you can, आपका नेक्स्ट रेमेडी क्या है? अगर कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर भी दे रेस्टिट्यूशन कंजुगल राइट्स के लिए और फिर भी अगर सामने वाले अपोजिट पार्टी नहीं आ रही या तो पेंडिंग लगा रहे टू कम एंड लिव विथ यू, इवन इफ द कोर्ट हैज़ ऑर्डर इन योर फेवर, तो आप क्या है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आप फाइल कर सकते हैं फॉर द ऑर्डर टू बी इम्प्लीमेंटेड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। एंड वैसा भी नहीं हुआ तो आप इवन यू कैन गो फॉर सैलरी अटैचमेंट ऑल्सो। इट्स वन ऑफ द weapons which can be used, or weapons you can say it's one of the remedy left to you which could be used by you as per the CRPC or other part of the acts. And this is one of the judgment where the court has order for this, and Maya Devi versus Kailash Chandra 2013 में ये order हुआ है। The decree of restitution conjugal rights can be enforced by attachment of the property or financial sanction, and if the party still does not comply. This is the point, and this is the matrimonial remedy. The remedy of restitution of conjugal rights is a positive remedy that requires both parties to the marriage to live together. ये बहुत important है, and इसमें कई भी judgments और भी है, और main part क्या है, it would take another year for the injured person to get the restitution of conjugal right if the other spouse
he rejects the order. The petition for restitution of conjugal rights cannot be submitted at the same time as a petition for divorce. ये one of the point which is very much important in restitution of conjugal rights when you will file before the court, and this is very much important prior to filing of any other remedy if you want to go for. And the decree of restitution of conjugal rights can be enforced by the attachment of property, and if the party complained against still does not comply, the court may also punish him or her for contempt of court, but under no circumstance the court can force the erring spouse to consummate marriage. This is very much important in restitution of conjugal rights. And as you know that restitution of conjugal rights is one of the important point prior to filing of any if you want to file divorce or anything else, and you people are living, the parties are living separately, and first thing which has to be done is restitution of conjugal rights. One of the party has to move it generally. अगर वैसा नहीं करके parties don't want to live together and they want to go for divorce, they can even file divorce also. But first, the main point is that restitution of conjugal rights, if they want to move, it is under section 9 of Hindu Marriage Act, and the remedies which are there is, if court has ordered in your favor, if the opposite party is not coming, who is a male person, if somehow, then you can ask for attachment of his property or his salaries also, or his financial institutions or whatever it is he is having with him, financial sanctions and other things. तो मित्रों, जो पहला important topic है वो restitution of conjugal rights, filing before a family court under section 9 of Hindu Marriage Act, and prior to that you have to give at any cost a legal notice to the other party, and after waiting for some time, when you give a legal notice, in that you will compulsory mention with regard to within the stipulated time she has to give reply or she has to come with you and live with you. If that is not complied by the other party, you can file a restitution of conjugal rights before the family court, and the court will, after going through the evidence part of both the parties, will allow the petition or dismiss the petition. If a petition is allowed and the other party is not coming forward to obey the court's order, the petitioner can file the attachment of property of the respondent, and even his financial whatever financial status he has, those can be attached by the court. This is the remedy to the petitioner who will file restitution of conjugal rights. Thank you very much for watching my video. Thank you, friends.